Hello everybody, let us continue our subject cost and work accounting. So today's lecture we are going to see the limitations of financial accounting. Limitations of financial accounting के साथ हमको क्या क्या cover करना है देखिए we should have to cover the origin of costing and the application of costing, the objective of cost accounting, then the advantages and limitations of cost accounting. So student, first of all, let us see the limitations of financial accounting. So what does financial accounting means? Financial accounting is mainly concerned with recording of business transactions in the books of account for the purpose of presenting final accounts to the board of directors, shareholders and tax authorities. The objective of financial accounting is to present a true and fair view of the company's income, financial position and funds at a regular intervals. Means यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में वो एक बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट डाउन करते हैं क्योंकि वो हमको प्रेजेंट करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स और टैक्स अथॉरिटीज को। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो ये होता है कि वी शुड हैव टू प्रेजेंट true and fair view of company's income, financial position and funds at a regular interval. In the modern business world, business concerns need some method and ways by which they can measure their performance. Financial accounting cannot serve this purpose at all. The indications given by profit and loss account and balance sheet are generally inadequate. It is the like thermometer which only indicates the temperature of human body. Only judgment can be made on the basis of such thermometer, and a good doctor will have to conduct a number of other checks in order to see what the patient is suffering from. The profit shown by profit and loss account should not be taken as a sign of success, because there may be loss in certain items which might have compensated by the profit or certain other items. Information regarding wastage and losses is very difficult to be obtained from financial account, and it is only cost account which makes such information available to the management. So यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बता रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ हम लोग जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल दिया यहाँ पे, डॉक्टर सिर्फ अगर पेशेंट को बुखार आया है, फीवर आया है, इफ देयर इज फीवर देन ही विल चेक ऑन द टेम्परेचर, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वो जो भी जो फीवर रहेगा उसके हिसाब से मेडिसिन प्रोवाइड करें। लेकिन व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गुड डॉक्टर शुड कंडक्ट अनदर टेस्ट, मतलब और चेकिंग कराएगा, वो ब्लड चेकिंग कराएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा, उसके बाद वो कुछ कंफर्म डिसीजन देगा कि ऐसा ऐसा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ही विल गिव यू द रीजन, देन ही विल प्रोवाइड यू द मेडिसिन अकॉर्डिंगली। सो इन सिमिलरली इन financial accounting, by not looking at the profit and loss statement, we should have to go in depth in the statement. Just we should not have to take the profit and loss in account to as a sign of success, because there may be losses on a certain items which might have been compensated by the profit of a certain other item. So these information regarding wastage and losses will be covered under cost accounting. These will not be covered under financial accounting. So this is the major limitations under financial accounting. So let us see few important limitations under financial accounting. See students, over here it is given that it shows only overall performance. Means financial accounting provides information about profit, loss, cost, etc. of the collective activities of the business as a whole. It does not provide data for each and every product, processes, department or operation separately. So it does not provide data for each and every product. It provides the data for the whole profit or whole business concern. Okay, it will provide the profit of whole business. It will provide the losses of whole business. It will provide the cost of overall production.
but it will not provide you the costing of each and every product. So in costing, the business will provide the data for each and every product, processes and departments of operations separately. So second one is it provides only historical data. Financial accounting is historical in nature, and it provides data of past activities. It provides data of past activities. It does not provide current data which management requires for making effective plans for future. So it is rightly said that financial accounting provides only post-mortem analysis of post activities. It does not help in fixation of selling price. So financial accounting provides us the historical data, as well as in the other hand, the cost accounting is providing you the data relating to the current analysis. Okay, so it is static in nature. Financial accounting is static in nature. Modern business is dynamic and and not static. Financial accounting does not incorporate the changes that takes place within the business. It fails to provide information for price fixation. In financial accounting, costs are not available by decision, products, processes, etc. So price fixation becomes difficult, and estimates cannot be prepared. It fails to control cost. It means financial accounting fails to control over material, labor, and other expenses incurred in a business enterprises. As a result, avoidable wastage and losses remains as it is under this system. So students, few more limitations are given on this page. So I will request, I am sharing PDF with you on WhatsApp group. So you just go through all these limitations. Now let us see the origin of costing. So origin of costing means, students, we should have to finish this theoretical concept within 2 to 3 days. In our next 2 to 3 lectures, we'll finish our first lesson, because we have to start our numerical related chapter, that is chapter 2, in which you will cover almost 15 marks question. So now let us try to finish this lesson in our next 2 to 3 lectures. So let us see the origin of costing. The Industrial Revolution in England presented a challenges to the development of accounting as a tool of industrial management. Costing technique were developed as a guides to management action that increases awareness on a part of the entrepreneur and industrial manager for using scientific principles of management. In the wake of scientific management movement led to the development of costing. The development of costing. So over here, it is clearly mentioned that the need for an accounting system which serves the management. Costing is designed to serve the management by undertaking the responsibilities of a comprehensive evolution for each and every cost related activities, and by furnishing the relevant data to the timely and appropriate action. So students, now from the above statements, it is clear that the scope of financial accounting does not extend to cover cost ascertainment and analysis of cost for cost control and providing cost information for managerial decisions. However, it provides abundant data to the cost accounting, which uses them for cost ascertainment. So cost control and for cost analysis for managerial decisions. So it is clear that the costing. It is also clear that the costing analysis them from the viewpoint of whether they are relating to the operating activities, and also from the viewpoint of other relevance to the decision under the consideration of the management. So student, by comparing the financial accounting and the cost accounting, by comparing the financial accounting, the cost accounting is relatively a recent development. In fact, that is, cost accounting started branch as a branch of financial accounting, but now it may well be regarded as a profession in its own right. The vital importance of cost accounting has
acquired in the modern age is because of the growth of complexion in modern industry. So now let us see the application of costing in Indian context. The application of costing methods in Indian industries was felt from the beginning of the 20th century. The following factors have accelerated the system of costing in our country. So students, let us see the application of costing in Indian contracts. Uh, so increased awareness of cost consciousness by Indian industrialists with a view to ascertain cost more accurately for each product or job. Growing competition among manufacturers led to fixation of prices at a lower level so as to attract more customers. Government economic policy emphasizing on land economy, increased government control over pricing led to Indian manufacturers to give more importance to the installation of cost accounts. So students, the establishment of National Productivity Council in 1958 and statutory body with Institute of Cost and Works Accounts of India. So now let us see some few of our objectives of cost accounting. Objectives of cost accounting are most important point according to the syllabus, and it is the exam oriented question also. So students, you should have to understand each and every concept or relating to objective of cost accounting carefully. So the first objective is ascertainment of cost. This is the primary objective of cost accounting for the purpose of ascertainment of cost of product, processes or operation. It is necessary to record the expenses incurred, classify them properly and then allocate or apportion it amongst the respective products, processes of department for calculating total cost of each of these. If there is only one product, cost per unit can be found out by dividing the total expenditure by the total number of units produced. But if there are number of products manufactured, then the cost is to be split up between various products. For this purpose, various techniques may be used. So students, this is our first objective. Now our second objective is control of cost. Cost control aims at improving efficiency by controlling and reducing cost. Cost control is exercised at different stages in the factory with acquisition of materials, recruiting and development of labor forces during production, during production process, and as such we have material cost control, labor cost control, production cost control, quality control and so on. Control over cost is exercised through the technique of budgetary control and standard costing. So, it's the most important point, students. You should have to underline this point. That is, control over cost is exercised through the technique of budgetary control and standard costing. Okay, so we will look some numericals on these two topics, that is budgetary control and standard costing, in our further units. Now, in this technique, cost is controlled by comparing actual cost with predetermined cost. Cost control is becoming more and more important tool because of growing compensation. So now the third objective is, that is determination of selling price. Cost accounting provides information on the basis of which selling prices of products or services may be fixed. Total cost of production constitutes the basis on which selling prices is fixed by adding a margin of profit. Cost accounting furnishes both the total cost of production as well as cost incurred at each and every stage of production. In fixation of selling price, other factors are also important, such as market condition, the area of distribution, volume of sales, etc. But no doubt, cost plays the dominating role in the price fixation, student. So, costing, the objective of the costing is to provide basis for operating policy.
Cost data to a great extent helps the management in formulating the policies of a business and decision making. Hence, availability of cost data is must for all levels of management. Some of the decisions which are based on cost data are make or buy decisions, manufacturing by mechanization or automation, whether to close or continue the operation in spite of losses, selling below cost decision, introduction of new products, etc. So I hope you have got the idea or main overview of the objectives. So these are other objectives which are mentioned over here. So I will request you to go through these objectives. Students, I am sharing this PDF in your WhatsApp group. So now let us see the advantages and limitations of cost accounting. Okay. So now students, the advantages of cost accounting is on your screen. So the first advantage is to help in decision making. Okay, so as we know that cost accounting helps in decision making, let us see the explanation over here. Decision making is concerned with choosing between alternative courses of action. An important factor involved in choice is the financial implication of the available alternative. So cost accounting is a decision making tool. It provides suitable cost data and alternative. Cost accounting is decision making tool and it provides the suitable cost data and other related information to enable management to evaluate alternative courses of action. The important decisions which are influenced by to a greater extent the cost reports are whether to diversify the company's product lines or not, fixation and or revision of selling price, to decide about whether a part is to be manufactured internally or to be purchased from outsiders. So whether the joint and or by products are to be sold at a split of point or after further processing, about the profitable sales mix, that is about the optimal level of activity, to decide about the discontinuation of activities of a sales branch temporarily or to drop a product purely on the temporary basis till the demand rises for the product. So to decide about scarce resources allocation, etc. So our second advantage is, students, I know the theory part may be difficult to understand or boring, quite boring, but you should have to make a notes of all these points. You should have to make a notes and do self study daily on a regular basis, because these theoretical part is also most important point of view according to the examination, because your cost and work accountancy because cost and work accountancy includes the 50% theoretical portion in your examination and 50% numerical portion in your examination. So now let us see the second advantages of cost and work accounting, that is supplies detailed of cost information. Cost accounting classifies cost and revenue by every possible division of the business and supplies management with the detailed and regular cost information. Such information is useful for ascertaining the cost of product, processes, department, division or unit of the services. Third one is guides in price fixation. Cost is one of the most important factor to be considered while fixing prices. It assists management in fixation of selling price both in normal condition and the periods of depression. With the help of costing only, it is possible to prepare estimates, tenders and quotation. Reveals operating efficiency, means cost information reveals profitable and unprofitable activities, so that steps may be taken to reduce and eliminate wastage and insufficient occurring in any form, such as idle time, underutilization of plant capacity, spoilage of material, etc.
So student, now fifth advantage is facilitates planning. It enables the management to know future cost so that appropriate plans and decisions can be made. So here are the few advantages related to costing. Now let us see few limitations of cost accounting. That is, it is expensive. Highly paid cost accountants and organization of costing system involves additional expenditure. However, before installing it, care must be taken to ensure that the benefits derived are more than the investment made on the system of accounting. It is more complex. Cost accounting system involves number of system in ascertaining costs such as collection and classification of expenses, allocation and appropriation of expenses, etc. These steps are considered as complicated. Again, a system requires several forms and documents in preparing the reports. This will tend to delay the preparation of accounts. Now students, let us see the limited applicability, that is the limitation of cost accounting. All business enterprises cannot make use of single method and technique of costing. It all depends upon the nature of the business and type of the product manufactured by it. If a wrong technique and method is used, it misleads the result of the business. So this is the major limitation, and a few of the limitations are given over here. And it is that it is not applicable to small concern. Cost accounting system is applicable only a large sized business and not suitable for small sized business because it is more expensive, student. And the fifth disadvantage is it is lack of uniformity. This is the greatest limitation of cost accounting system. It fails to conform to any uniform procedure. It is possible that two equally competent cost accountant may arrive at different results from the same information. So it is said that all cost accounting results are mere estimates, hence it is not reliable. And sixth disadvantage is lack of accuracy. Accuracy in cost accounting is relative. Certain assumptions are always made while asserting cost to suit particular situation. Confusion regarding non-cost items is the another limitation. That is, there may be confusion regarding non-cost item. Example, interest on capital, cash discount, etc. should be included or to be excluded from cost accountant. Not useful for handling futuristic situations. So cost accounting is not useful to handling futuristic situation. The contribution of cost accounting for handling futuristic and the futuristic situation has not been much. For example, cost accounting has not evolved any tool so far handling inflationary situation, and cost accounting is failure in many cases. So it is argued that the adoption of cost system failed to produce the desired results in many cases, and so it is defective, and it fails in considering social obligation students. So cost accounting fails to make take any account the social obligations of the business. In other words, social accounting is outside the pure view of the cost accountant. So students, now let us see the difference between the financial accounting and cost accounting. So first of all, over here it is given that the point of distinction and financial accounting and cost accounting, distinction between financial accounting and cost accounting. Number one is our coverage. It covers the account of whole business relating to all commercial transactions. So students, financial accounting covers account of whole business relating to commercial transactions, whereas cost accounting covers the transaction relating to the certain specific activities only. Example, production, sales, services, etc.
And the purpose of financial accounting is external reporting mainly to owners, creditors, tax authorities, government, and prospective investors. Whereas the cost accounting purpose is the internal reporting, that is to management of every business. And next one is statutory requirement of financial account, that is these accounts have to prepared according to the legal requirement of Companies Act and Income Tax Act student. And in cost accounting these accounts are generally prepared to meet the requirement of the management, but now it has been made obligatory to keep cost records under the Companies Act. And where in financial accounting, the recording of transaction classifies and analyzes the transactions in a subjective manner, that is according to the nature of expenditure. Whereas in cost accounting, it records the expenditure in objective manner, that is according to the purpose for which costs are included. And the nature of cost is, student, it records only historical costs, and financial accounting records only historical costs, whereas cost accounting records both historical and estimated cost. And the nature of expenses of financial accounting are recorded in totals, whereas in cost accounting the expenses by proper analysis and classification in order to find out cost per unit. And the analysis of cost and profits in financial accounting disclose profit for the entire business as a whole. It does not show the figure of cost and profits for individual products, departments, and processes. Whereas in cost accounting it shows the profitability or otherwise of each product, process, or operation, so as to reveal the areas of profitability. So duration of reporting in financial accounting are prepared, that is periodically, usually on an annual basis, but in cost accounting it is continuous process and maybe daily, weekly, or monthly reports are prepared. And the control aspects under cost accounting, under financial accounting does not make use of any control technique. It does not control material and labor cost. But in cost accounting, it makes the use of some important control techniques such as standard costing, marginal costing, budgetary costing, etc. It exercises control over material cost by APC analysis, level setting, economic order quantity, etc. And over labor cost by minimizing idle time or overtime, etc. The types of statement prepared under financial accounting is profit and loss and balance sheet. But in the statement prepared in cost accounting is generated specially for the purpose are reports like report of loss of material, idle time report, variance report, turnover report, etc. And in pricing, it is fails to guide the formulation of pricing policy under financial accounting. But in cost accounting, it provides adequate data for formulating pricing policy. And the valuation of stock under financial accounting is valued at cost price or market price, whichever is less. But in cost accounting, stock is always valued at cost price. And the evaluation of efficiency in the financial accounting is the information provided is not sufficient to evaluate the efficiency of the business. But in cost accounting, the cost data helps in evaluating the efficiency of the business. Now students, I am sharing a short video clip regarding the difference between financial accounting and cost accounting. The next video is just for your reference purpose. So students, just listen carefully and make a note of each and every points which are shown in the video. डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या फर्क है, क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। डिफरेंस से आपको ये भी पता चल जाएगा दोनों की हमें जरूरत है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो टोटल हमारे पास 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जिनके बेसिस पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला, जो कि है पर्पस। पर्पस क्या हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को
क्यों करते हैं हम, एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों प्रिपेयर करता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों प्रिपेयर करता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करने का मेन पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस पता चल सके। अब वो फाइनेंशियल पोजीशन वो बताएगा बेसिकली आउटसाइडर को। आउटसाइडर कौन से को होंगे, या क्रेडिटर हो जाएंगे, या बैंक हो जाएगा, या टैक्स अथॉरिटी हो जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है ताकि बिजनेसमैन, क्रेडिटर्स और आउटसाइडर पार्टीज को फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस पता चल सके, ताकि वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के अपनी मैनेजमेंट का वर्क करे बिजनेसमैन, और बैंक उसे लोन दे और टैक्स अथॉरिटी उसकी टैक्स की वैल्यू निकाल पाए। पर कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस कुछ और होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है कॉस्ट की रिलेटेड, जो कि इनर यूज होती है, जो आउटसाइडर पार्टीज हमारी क्रेडिटर्स, बैंक और टैक्स अथॉरिटी को काम में नहीं आती। सो ये बेसिकली प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डिसीजन बनाने के लिए यूज किया जाता है। पर्पस में इन दोनों का डिफरेंस ये था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के रिलेटेड डिफरेंस। रिकॉर्डिंग के रिलेटेड डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्डिंग करती है, परंतु कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्डिंग करती है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, जब हम सब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्डिंग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसिंग के रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि एक्सपेंसेस का नेचर क्या है। पर जब हम ऑब्जेक्टिव मैनर में कॉस्ट अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करेंगे एक्सपेंसेस की, अब हम पर्पस करेंगे, पर्पस के रिलेटेड करेंगे, यानी कि जो नेचर की क्लासिफिकेशन होगी वो सब्जेक्टिव के मैनर में होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और ऑब्जेक्टिव के मैनर में होगी कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये था इसका दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस इसमें क्या है, कंट्रोल के बेसिस में, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोर कंट्रोल होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के रिलेटेड के, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे मैंने पहले बोला फोकस करती है, पर्पस होता है कि वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताए, और फाइनेंशियल पोजीशन तभी पता चलेगी जब बिजनेस की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बिजनेस को पता चलेगी और वो उससे उसकी बैलेंस शीट बना के उसकी फाइनेंशियल पोजीशन तैयार करेगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंट्रोल ज़्यादा होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पर। हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका ज़्यादा कंट्रोल किस पे होगा, मटेरियल, लेबर एंड जो वेस्टेज प्रोडक्ट की हो रही है उसको मिनिमाइज करना और अनदर कॉस्ट से रिलेटेड कंट्रोल के ऊपर। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क करती है कंट्रोल रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्क करती है रिलेटेड टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। फोर्थ जो हमारा डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, यानी कि ये किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। पहले हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है मनी के रिलेटेड, यानी कि मॉनेटरी टर्म में इंफॉर्मेशन, परंतु जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमें दोनों मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। जैसे हमारे पास यूनिट्स, हमारे पास कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और उन यूनिट्स की क्वांटिटी होगी जो केजी में है या पर यूनिट है, वो हमारी होगी नॉन मॉनेटरी टर्म। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें मनी में प्रोवाइड करती है, मॉनेटरी टर्म में प्रोवाइड करती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग हमें नॉन मॉनेटरी टर्म में और मॉनेटरी टर्म में दोनों में प्रोवाइड करती है। तो ये फोर्थ डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिफ्थ डिफरेंस है फिगर्स के बेसिस में। फिगर्स से क्या मतलब हो गया कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड करती है एक्चुअल फिगर्स। एक्चुअल फिगर्स कौन सी, जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं एक्चुअल में, परंतु जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे भी, यानी कि पार्शली एक्चुअल फैक्ट्स और एस्टिमेटेड के बेसिस पे भी रिकॉर्डिंग कर देती है। कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है तभी उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग होगी, परंतु जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे हम तो पिछले ईयर का या अनदर ईयर का एस्टिमेट लगा के भी उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये है हमारा फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमारा सिक्स्थ डिफरेंस है स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन से क्या मतलब हो गया कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तब हम जो लेस होगी कॉस्ट से या मार्केट वैल्यू से जो लेस होगी उसी को हम अपनी स्टॉक की वैल्यू मानेंगे। पर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, यानी कि स्टॉक की वैल्यू निकाल के देखेंगे एसेट की, स्टॉक की, तब हम जो एक्चुअल में कॉस्ट पड़ी हमें वो रिकॉर्ड करेंगे। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि प्राइस की फिक्सेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करके प्राइस की फिक्सेशन करेंगे तब वो डिफरेंट प्राइस आएगा, और जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करके प्राइस की फिक्सेशन करेंगे तो वो अलग आएगा, जो कि बहुत बड़ी एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग की फॉर द रिलेटेड टू फिक्सेशन ऑफ प्राइस। तो इसको डीपली समझते हैं। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करेंगे तब हमें वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि हमारे प्रोडक्ट की क्या सेलिंग प्राइस होगी, यानी कि बेसिकली उसका वर्क नहीं होता कि वो हमारी सेलिंग प्राइस को या कॉस्ट को पता कराए, हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को
पता कर पाए। अगर वो पता कर पाएगी तो वो एट द ईयर एंड में ही पता कर पाएगा, क्योंकि एट द ईयर एंड ही हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार होती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कहीं भी रोल नहीं होता फॉर द फिक्सेशन ऑफ प्राइस, यानी कि हमें एग्जैक्ट प्राइस फॉर सेलिंग प्राइस हमें नहीं बता पाता। पर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे तब हम प्रोडक्ट्स के बनने से पहले और प्रोडक्ट के बनने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन लेके हम उसका मार्केट कंडीशन देख के, वेरियस कंडीशंस देख के हम प्राइस की फिक्सेशन कर सकते हैं। यानी कि कॉस्ट काउंटिंग में हम कॉस्ट काउंटिंग का यूज़ करके मैनेजमेंट इजीली कुछ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज की फिक्सेशन यानी कि सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकता है, जो कि है बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बढ़ते हैं हमारा 8th डिफरेंस, वो जो कि कहता है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। हमारा जो नेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जैसे कि आपको पता है, वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट देगा या नेट प्रॉफिट देगा फॉर द होल बिजनेस एट द ईयर एंड। पर जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमें पूरे बिजनेस का नहीं बल्कि एक सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल यूनिट और सिंगल प्रोसेस का हमें एक पर्टिकुलरली प्रॉफिट बता सकता है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें नहीं बताता। हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस का बताता है और एट द ईयर एंड में बताता है। पर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे तब हम एक सिंगल यूनिट एंड प्रोसेस का प्रॉफिट एनालाइज कर पाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द प्रोडक्शन से पहले भी और प्रोडक्शन के बाद भी, ईयर एंड खत्म होने के बाद और ईयर एंड से पहले भी। अब बात करते हैं हमारा जो 9th डिफरेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में, वो है कि हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट कैसे करती है और कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट कैसे करती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जब हम कॉस्ट की रिपोर्टिंग करेंगे टोटल, एग्रीगेट और टोटल में वो उस कॉस्ट की प्रोडक्ट की कॉस्ट बताएगा, यानी कि उस सिंगल बल्क क्वांटिटी में या एग्रीगेट में प्रोडक्ट की कॉस्ट बताएगा। पर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे तब उस केस में वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सिंगल प्रोडक्ट्स, यूनिट्स एंड प्रोसेस एंड बैच एंड कंपोनेंट की अच्छे से कॉस्ट की रिपोर्टिंग कर पाएगा, यानी कि अच्छे से हम कॉस्ट की ईच सिंगल यूनिट एंड प्रोडक्ट की रिपोर्टिंग कर पाएंगे, यानी कि उसका पूरा डाटा तैयार कर पाएंगे। परंतु फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ एग्रीगेट एंड वो भी एट द ईयर एंड में ही बता पाएंगे फॉर द प्रोडक्ट। और जो हमारा लास्ट डिफरेंस यानी कि 10th डिफरेंस है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियड, यानी कि रिपोर्टिंग का क्या पीरियड रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा एट द ईयर एंड बनाई जाती है, पर जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो शॉर्ट इंटरवल के लिए भी हो जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी शॉर्ट इंटरवल में होती है और जिसमें हम विदिन वीक होगी या मंथ में होगी, ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि कॉस्ट क्या आ रही है हमारे प्रोडक्ट की और क्या सेलिंग प्राइस होगा, और विदिन अ मंथ और विदिन अ वीक हम किस प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को बेचेंगे, और मैनेजमेंट अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज करके डिसीजन ले पाएगी। तो ये थे हमारे कुछ 10 डिफरेंस पॉइंट्स